Today I am going to discuss about the pseudo first order reaction. So now question is, what type of chemical reactions are known as pseudo first order reactions? So pseudo first order reactions are that chemical reactions in which more than one reactants are reacting to produce the products. But reaction follows first order kinetics are called pseudo first order reaction. सो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिस रिएक्शन में एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, लेकिन रिएक्शन कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर. सो जब एक रिएक्शन में रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा रिएक्ट करने से रिएक्शन का ऑर्डर भी वन से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जहाँ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक से ज़्यादा होता है, एक से ज़्यादा डिफरेंट रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, लेकिन रिएक्शन ऑलवेज कौन सा ऑर्डर फॉलो करता है? फर्स्ट ऑर्डर फॉलो करता है. सो दैट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. तो लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ pseudo first order reaction. This is an example of pseudo first order reaction. It is an organic reaction. This compound is known as ethyl acetate. It is an ester. When ethyl acetate is hydrolyzed, hydrolyzed means reaction with water in presence of dilute acid, produces acetic acid and ethanol. This is an example of pseudo first order reaction. So how many reactant molecules are participating in this reaction? Two reactant molecules are participating. Two different reactant molecules are participating in this reaction. One is ethyl acetate, another is water. But during this reaction, concentration of water does not alter much. That means during this reaction, water का concentration ज़्यादा change नहीं होता है. So we can take concentration of water during this reaction remains the constant. हम लोग ये रिएक्शन में concentration of water को क्या कंसिडर कर सकता है? कांस्टेंट कंसिडर कर सकता है, क्योंकि ड्यूरिंग दिस रिएक्शन ये वाटर का अमाउंट, इनका कंसेंट्रेशन ज़्यादा चेंज नहीं होता है. So therefore rate expression for this reaction, rate equal to suppose rate constant let us consider as K dash into concentration of ethyl acetate into concentration of water. And during this reaction concentration of water remains the constant. Therefore this rate expression becomes K into concentration of ethyl acetate. So K equal to, let us consider K equal to K dash into concentration of water. Let us consider it. So K dash constant, concentration of water is constant during this reaction. So constant into constant, let us consider another constant K. So this is the rate expression, final rate expression for this reaction. So according to the rate expression, how many order of this reaction? First order reaction, क्योंकि reactant का exponent कितना है? 1. So this is a first order reaction. लेकिन ये reaction में 1 से ज़्यादा different reactant molecules are participating in this reaction. So this is an example of a pseudo first order reaction. So why it is a pseudo first order reaction? क्योंकि ये reaction first order follow कर रहा है. Although in this reaction two different molecules are reacting to produce the product. So this is an example of pseudo first order reaction. So pseudo first order reaction ऐसा reaction से जहाँ reactant molecule एक से ज़्यादा reactant molecules are reacting to produce the product, लेकिन reaction always कौन सा order follow करता है? First order follow करता है. That type of reactions are known as pseudo first order reaction. So one more example of a pseudo first order reaction, C12H22O11, it is known as sugar को हाइड्रोलाइज करने से
when sugar is hydrolyzed in presence of acid, produces glucose. Glucose produces glucose and fructose. Glucose and fructose both have same molecular formula, but their structures are different. During this reaction also, concentration of water remains the constant. That means during this reaction water का concentration ज़्यादा change नहीं होता है, इसलिए water का concentration considered as constant during this reaction. So rate expression for this reaction, rate equal to K dash into concentration of sugar C12H22O11, it is sugar, into concentration of water. And during this reaction concentration of water remains the constant, so concentration of water, it is a constant, and K dash is a constant. Then constant into constant, let us consider another constant. That constant let us consider as K into concentration of sugar also known as sucrose. So this is the rate expression for this reaction. So according to the rate expression, how many order of this reaction? 1. This is a first order reaction. Although in this reaction, 2 reactant molecules are reacting to produce the product. So this is also an example of pseudo first order reaction. So let us discuss now about the effect of catalyst on the rate of a reaction. So everybody know it, a catalyst accelerate the rate of a chemical reaction. हम लोग सभी को मालूम है कैटलिस्ट का प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन का रेट इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन कैटलिस्ट का क्वांटिटी, उनका कंपोजिशन चेंज नहीं होता है. जस्ट कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके केमिकल रिएक्शन का रेट बढ़ा देता है, लेकिन कैटलिस्ट का क्वांटिटी, उसका कंपोजिशन ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन नेवर चेंज. So let us consider a chemical reaction. This is a chemical reaction. This is known as potassium chlorate. When potassium chlorate is heated, when heated in presence of manganese dioxide behaves as a catalyst, produces potassium chloride and oxygen. So हम लोग रिएक्शन को बैलेंस करने से यहाँ 2 लगाना पड़ेगा, यहाँ हम लोग 3 डालना पड़ेगा. So manganese dioxide behaves as a catalyst in this reaction. Those chemical reactions are involving in presence of a catalyst, they are known as catalysis. So this is an example of catalysis reaction. So regarding the catalysis reaction, we will discuss in another chapter. Name of the chapter is surface chemistry. So now question is, how a catalyst increases the rate of a chemical reaction? A catalyst chemical reaction का rate कैसे बढ़ा देता है? सो कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लोगों का साथ टेम्पोररी बोन फॉर्मेशन कर लेता है, और टेम्पोररी बोन फॉर्मेशन करके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का साथ इजीली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है. अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस वीडियो, बिफोर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट बी फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स. Then activated complex are converted to product. So catalyst क्या करता है, reactant molecule लोगों का साथ temporary bond formation करके easily activated complex को form कर लेता है, and activated complex easily converted into product. So chemical reaction में then catalyst का काम क्या है, catalyst reactant molecule लोगों का साथ temporary bond form करके easily activated complex form कर लेता है. सो केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट का काम है टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथ फॉर द कन्वर्शन ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट. सो हाउ ए कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथ फॉर ए केमिकल रिएक्शन? ए कैटलिस्ट provides an alternate path for a chemical reaction by decreasing activation energy for a reaction. So in presence of catalyst, activation energy of the reaction decreases. When activation energy decreases for a reaction, then reactant molecules easily attains the activated complex, then reactant molecules are easily converted into product. So most important point related to catalyst,
How a catalyst increases the rate of a chemical reaction? Catalyst increases the rate of a chemical reaction by decreasing activation energy of the reaction. When activation energy for a chemical reaction decreases, then part of the conversion of reactant to the product is decreased. Part will be altered. So in presence of a catalyst, activation energy of the reaction decreases, then rate of the reaction increases. So how a catalyst increases the rate of a chemical reaction, how a catalyst decreases the activation energy of a chemical reaction, we can discuss with the help of a graph. So this is a graph which explains how a catalyst increases the rate of a chemical reaction. So in this graph, potential energy of the reaction is plotting against the reaction coordinate. So this is the solid line, this is the solid line, this is the way of conversion of reactant to product in absence of catalyst. So this is for uncatalyzed reaction. This is the way of conversion of reactant into product in absence of catalyst. So in absence of catalyst, let us consider how many activation energy EA dash. And dotted line represents here, this is the way of conversion of reactant into product in presence of catalyst. So those chemical reactions are involving in presence of catalyst, they are called catalysis. So EA double dash is the activation energy for this reaction in presence of catalyst. So this is the long way of conversion of reactant into product in absence of catalyst. लेकिन जब सेम रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल दिया, then way of conversion of reactant to product becomes short. So catalyst का presence में reactant product में convert होने का जो रास्ता है, रास्ता क्या हो गया? Short हो गया. कैसे short हुआ? क्योंकि in presence of catalyst reaction का activation energy decrease हो गया. So for a chemical reaction, catalyst provides an alternate path for the conversion of reactant into product. How a catalyst provides an alternate path for a chemical reaction? By decreasing activation energy of the reaction. So most important point of this topic, that in presence of a catalyst, rate of a chemical reaction increases. How? Because in presence of a catalyst, activation energy of the reaction decreases. That means a catalyst increases the rate of a chemical reaction by decreasing activation energy of the reaction. लेकिन कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन का गिब्स एनर्जी चेंज नहीं करता है. सो कैटलिस्ट डज नॉट change the Gibbs energy for a chemical reaction, and catalyst also does not disturb the equilibrium state of a chemical reaction. जब एक chemical reaction, reversible chemical reaction equilibrium attain कर लेता है, at the equilibrium state rate of forward reaction equal to the rate of backward reaction. जब एक reversible chemical reaction equilibrium attain कर लेता है, देन इक्विलिब्रियम स्टेट में हम लोग रिएक्शन में कैटलिस्ट डाल देने से रिएक्शन का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा. तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन डज नॉट चेंज. सो व्हाई कैटलिस्ट डज नॉट चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट? बिकॉज कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन टू द इक्वल एक्सटेंट. कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जितना एक्सटेंड बढ़ा देता है, बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी इक्वल एक्सटेंट में बढ़ा देता है. इसलिए कैटलिस्ट एक रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है. और एक कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन का गिब्स एनर्जी और गिब्स फ्री एनर्जी को भी चेंज नहीं कर सकता है. सो वेरी शॉर्टली देन वी कैन डिफाइन ए कैटलिस्ट. Catalyst is a substance which alters the
rate of a chemical reaction without itself undergoing any permanent chemical change. Thus, this is the definition of a catalyst. And a catalyst how participate in the in a chemical reaction? A catalyst participate in a chemical reaction by forming temporary bonds with the reactants, resulting the formation of an intermediate or activated complex. So catalyst कैसे केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है? कैटलिस्ट रिएक्टेंट मॉलिक्यूल लोगों का साथ टेम्पररी बोन फॉर्म करके इजीली एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट को फॉर्म कर लेता है. सो कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथ बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. तो कैटलिस्ट का मेन फंक्शन है केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करना. तो कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन का एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके रिएक्शन को एक शॉर्ट ऑल्टरनेट पाथ प्रोवाइड करता है. सो important points. So these are two important points related to the catalyst. A catalyst does not change the Gibbs energy or Gibbs free energy of a chemical reaction. A catalyst does not change the equilibrium state of a reaction. Rather, a catalyst helps in attaining equilibrium fast. A chemical reaction को इक्विलिब्रियम को फास्ट अटेन करने के लिए, जल्दी अटेन करने के लिए कैटलिस्ट क्या करता है? हेल्प करता है. लेकिन कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है. सो दिस इज अबाउट द इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन. थैंक यू.